All right. I hope I'm clearly audible. The voice is clear and we are good to go. First and foremost, what is it about which we are here for? हम क्या discuss करने वाले? Which topics? Which areas? Why is tablets being such a topic where we need a discussion? Many times we feel अरे यार tablets तो बहुत easy है. Tablets में क्या ही है पढ़ने के लिए? But one of the most important thing to understand when you are reading it for entrance and when you are reading it for semesters, these are two different things. The way you prepare for semesters will be very different than the way you talk about preparing for entrance. Again, when you go about entrance is going to be more focused on MCQs. So somewhere if you are focusing on theory, if you are reading entire lacman, that is not required when you are preparing for entrance purpose. Theory nahi chahiye humko. We need to be specific. We need to know what areas are the ones wherein we can expect questions more to come. At the same time, we need to ensure that if at all there is anything which comes in depth from the paper, in depth from the chapter, then we should still be able to answer it. It should not happen that we just prepared few MCQs and we walked in. So throughout our today's discussion on the chapter of tablets with regards to entrance point of view, we are going to talk about multiple things. First and foremost, before I get going, I want a green signal from all of you with regards to audio. Is the voice clear, Jashandeep, Akshay, Kanaya? No problem with regards to voice. No background disturbances. The screen is clearly visible. On screen, we have tablets in place and we are good to go. On screen, we have tablets in place and we are good to go. Just for your information, this lecture is happening via YouTube. So when we go about lectures via YouTube, whatever I am going to say or discuss during the lecture, that is going to go across to you 6 seconds later. So it might happen आपको लगेगा कि voice lag है कि क्या नहीं. मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुंचने को 6 seconds का gap रहेगा. So don't worry, you're not missing on to anything. Nor I am going slow or going haphazard. Whatever questions, whatever doubts, whatever queries you have during the lecture, you can feel free to type it in the chat box. अगर आपको चाहिए कि मैं कोई भी चीज repeat करूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, please write in the chat box. I'll repeat it. And most importantly, don't worry. Whatever I'm saying in English is the same thing I might repeat in Hindi, Marathi, Gujarati, or some other language. So you're not missing on to anything apart from that as well. Just to get a quick idea where we stand presently. हम कौन से ईयर में आर वी इनटू सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, व्हिच ईयर डू वी टिपिकली बिलोंग ऑन टू? अभी हम लोग ने कॉलेज में कौन से सेमेस्टर के एग्जाम्स लिखे? दिस इज जस्ट फॉर मी टू गेट एन आइडिया दैट एज वी प्रोसीड फर्दर विद लेक्चर वी हैव क्लैरिटी दैट हाउ आर वी सपोज्ड टू प्रोसीड फर्दर अकॉर्डिंगली. व्हिच ईयर डू वी बिलोंग टू? किसी ने सेमेस्टर 4 रिसेंटली लिखा होगा, किसी ने सेमेस्टर 5 लिखा होगा. So when it comes to getting ideas from semester, this is just to understand that शायद बहुत लोगों को कॉलेज में टैबलेट्स का चैप्टर हो गया होगा. So there I'll be able to give you a clear cut demarcation कि आप जब GPAT के लिए सेम टैबलेट्स का चैप्टर पढ़ोगे, then how come you are supposed to invest less time? And अगर वो सेम चीज आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हो तो शायद आपको 1-2 दिन लगेंगे, but that same thing for entrance should not take more than 5 hours. Yes, 5 hours भी बहुत ज्यादा बोल दिया. केस स्टडीज और सब पकड़ के more than 5 hours should not be the case. So एक चीज समझ लो, when it comes to entrance, pharma creation, don't worry, I'll answer all the question, all the doubts in the chat box coming together as and when possible during the lecture or at the end. If at all you have not joined any batch for GPAT 23, 24, 25, then there are new batches starting up. You can feel free to call up onto the number which is going down in the ticket. Just call them up and they'll let you know the entire process with regards to how to join in and what are the protocols and all. Anyways, coming back to our topic, got an idea that आप सब लोग 4th या 6th semester वाले हो. There are going to be series of demo lectures based on individual lectures, subjects, topics which you wanted. So there is one Google form which I have just shared in the chat box. That same Google form I have pinned in the chat box as well. I request you all to fill in that particular Google form so that whenever next further demo lectures happen, you are being notified via joining link for the same. Anyways, let's start with our today's lecture. We are going to talk on one of the favorite subjects, one of the favorite topics when it comes to entrance, that is from the chapter of tablets. Now, interesting thing to tell you when it comes to entrances like GPAT, NIPER, ICT, BITS, Manipal,
In all these papers, to a good extent, a good number of case studies actually turn around the chapter of tablets. Yes, case studies ज्यादातर नाइपर के पेपर में बोलो या जीपैट के पेपर में टैबलेट से आती है. Now, when it comes to case studies, do you think the questions are going to be straightforward? No. जैसे मैं आपको अभी चैप्टर के थ्रू लेके ही जाने वाला हूँ, पर मेरे को आपको सिर्फ एक चीज बताने दो, जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूँ. बेसिकली हो रहा क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पता होती है, बट व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन उनसे नहीं हो पाता. सो लेट मी टेल यू अ सिंपल थिंग, देयर इज समथिंग नोन एज ग्लाइडेंट. शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. गोइंग फर्दर, हम लोग ने अभी तक चैप्टर चालू नहीं किया है, मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ देना चाहता हूँ. ये ग्लाइडेंट का काम बेसिकली ये है कि उसको फ्लो बढ़ाना है. इट इम्प्रूव्स द फ्लो प्रॉपर्टी. इफ द मटेरियल इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपर्ली, इट इज गोइंग टू एड इन द फ्लो better करेगा, and that's how your powder flow would increase. Now, when it comes in entrance, they won't ask you that what is the role of glidant. वो आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे रोल ऑफ ग्लाइडेंट क्या है. वो आपको घुमा घुमा के बोलेंगे. दे विल टेल यू रेमडेसिविर का पाउडर है, रेमडेसिविर पाउडर इज नॉट फ्लोइंग प्रॉपर्ली. Which among the following excipients I'll use? I hope you all know the terminology API and excipients. API is active pharmaceutical ingredient, which is your drug basically. API को छोड़ के, active pharmaceutical ingredient, drug को छोड़ के बाकी जो भी बचता है, that entirely is your excipients. तो API और excipient आप जब ये दोनों चीजें मिक्स करते हो तब जाके आपका टैबलेट बनता है. Just for your information. So question will be straightforward, that which among the following excipient will be used to improve the poor flow in remdesivir powder. तो अगर रेमडेसिविर, आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द ड्रग रेमडेसिविर. किसमें यूज हुआ था? कोविड में था एप्लीकेशन कुछ. रेमडेसिविर के इंजेक्शंस वर सेलिंग लाइक गोल्ड, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट these all drugs, their applications, how are they going to be utilized, the important thing which stands from entrance point of view is not the straightforward thing. तो आपको नहीं पूछेंगे रोल ऑफ ग्लाइडेंट क्या है. वो क्या करेंगे, ग्लाइडेंट का जो एग्जांपल है, ग्लाइडेंट के एग्जांपल में क्या क्या आता है? एनीवन हु कैन नेम इट. इज टैल्क अ ग्लाइडेंट? इज टैल्क अ ग्लाइडेंट? डज टैल्क इंप्रूव फ्लो? अगर टैल्क फ्लो इंप्रूव करता है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. वो आपको बोलेंगे रेमडेसिविर के पाउडर का फ्लो हो रहा है, which among the following excipient you will use, and they will give you different examples. और 4 ऑप्शंस रहेंगे. आई होप यू ऑल आर अवेयर, जी पार्ट में 4 ऑप्शन होते हैं. तो आपको एक ऑप्शन स्टार्च होगा, एक ऑप्शन सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट होगा, एक ऑप्शन आपको क्रॉस पोविडोन होगा, एंड वन ऑफ द ऑप्शन which will be the fourth one, that would be talc. So again observe, they have not given category, they have not said glidant in option. उन्होंने glidant के जैसे जो material यूज होता है which is talc, that is being given in option. So understand the depth of the paper. It's going to be more about application compared to theory. Semester में हमको short note लिखना पड़ता है. Am I correct? In semesters we are supposed to write with short notes. Write a short note on excipients used in manufacturing of tablets. Write a short note on machines used in manufacturing of tablets. My friend, you don't need those all things when it comes to entrances like GPAT network. एक basic चीज दिमाग में fit कर लो. That basic thing which you need to fit in your mind is, when it comes to preparing for any entrance, जितना important ये पता होना है that what is supposed to be read, पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है वो पता होना जितना important है ना, उतना ही important ये पता होना है कि what is not supposed to be read. If you are investing time on machines, कौन सी मशीन कैसे चलती है, वो मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है कि प्लास्टिक से बनी है, नहीं, वो सब नहीं चाहिए. जीपैट नाइपर को सिर्फ ये चाहिए कि टैबलेट्स बनाने के लिए कौन से मशीन यूज होते हैं. सो यू शुड नो द नेम ऑफ द मशीन्स. टैबलेट्स के पाउडर्स के लिए कौन से मशीन होते हैं, ग्रैन्युलेशन में कौन से मशीन होते हैं, चिल्सोनेटर एंड ऑल. वो आपको चिल्सोनेटर का डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोलेंगे, वो आपको चिल्सोनेटर का प्रोसेस नहीं पूछेंगे. Am I very much clear enough? Are you able to get the depth? Can we start with the chapter now? Khushi, Abhay, Heath, are we ready? Let's get going. Pranjal, Kanaya, Akshay. So starting with the part of tablets. First and foremost, मेरे को एक चीज बताओ. When it comes to tablets, can I say simply that tablets are something which are going to be a solid oral dosage form only? हम लोग tablets हमेशा oral route से ही लेते हैं. Am I correct, Jasindi? टैबलेट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही रूट से प्रेफरेबली दिया जाता है, which is your oral solid route via mouth. Now help me to understand one more thing. When it comes to administering tablets via oral route, क्या आप पेडियाट्रिक और जेरियाट्रिक में टैबलेट ज्यादा प्रेफर करते हो कि पेडियाट्रिक जेरियाट्रिक में? आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म पेडियाट्रिक जेरियाट्रिक. बच्चे, जेरियाट्रिक मतलब द सीनियर सिटीजन व्हिच आर अबाउट एज ऑफ 60. तो ये जो दोनों पॉपुलेशन है,
Is it easy for them to accept tablets? क्या वो tablets easily खा लेते हैं, or they don't prefer tablets and they want something else? Do they prefer tablets? No. शायद जब भी हम pediatric पे जाते हैं या geriatric पे जाते हैं, तभी भी अपना जो preference होता है, that is more around syrups. Am I correct? As a small child and as a elderly person, swallowing is a very difficult process. हम सबके लिए swallowing easy नहीं होता. तो अगर patient के लिए swallowing easy नहीं, in that particular case where the patient is not able to swallow the tablet easily, obviously we will prefer a syrup over it. Am I correct? Why are we doing this? ये point of view से हम क्यों सोच रहे हैं? Because tomorrow when we are going to talk about case studies based on tablet, मार्के आएंगे तब कहीं ना कहीं उसका आंसर इसके बेस में होगा, which is a part somewhere of your dispensing pharmacy and all other areas जो आपने शायद semester 1 में पढ़े थे. Again, the next most important thing when we talk about tablets, most of the time tablets आपने अलग-अलग shape के देखे रहेंगे. Am I correct? At times you might have seen tablets which were having a different shape. कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं. So why is that change around? Many times tablets are oval. Many times tablets are circular. Many times tablets are very small. What is the reason? Again, tablets में भी अलग-अलग type होते हैं. Have you seen any specific tablet जिसको हम लोग पानी में डालते हैं तो it starts bubbling? Have you seen any specific type of tablets which when put up in water they start bubbling? देखा होगा शायद. Disprin देखा है? Disprin is what? Disprin is a effervescent tablet. आप Disprin के tablet को पानी में डालो, it starts bubbling. So effervescent type of tablets is one different type of tablet altogether. आपने शायद ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट शायद ही रेयरली किसी ने खाया होगा. Don't worry, as we proceed further, we are going to talk in detail about each of these tablets. So when I talk about orodispersible tablets बोलो या ODT बोलो, orodispersible tablets का any idea what is the biggest advantage? नहीं, नहीं. Further information, orodispersible tablets को आप simply tongue पे रख देते हो. You place it on the tongue. After placing it on tongue, within 30 seconds, the orodispersible tablet dissolves. क्यों ऐसा? इतना immediate action क्यों चाहिए? Why within 30 seconds you need an immediate action? ऐसे कौन से emergency वाले conditions होते हैं या ऐसे कौन से emergency वाले situations होते हैं wherein you want that the drug should show its therapeutic activity within 30 seconds? ऐसा क्यों होता है? कब होता है? What is the major advantage? Good one करेगा, fast release. But कौन से disease में ऐसा required है? Can I say जब patient को heart attack आता है, if the patient suffers from myocardial infarction, सुना है myocardial infarction? Myocardial infarction is what? और डायबिटीज के लिए सर आप पैरेंटल रूट से इंजेक्शन भी दे सकते हो, बुट्राइन जशनली, बट डायबिटीज के लिए बहुत सारे रैपिड एक्टिंग इंसुलिन आते हैं. तो जब हम लोग डायबिटीज के चैप्टर में जाएंगे दैट टाइम वी विल टॉक मोर इन डिटेल. बट कंसीडर अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक. अब पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, बाय द टाइम यू टेक हिम टू द डॉक्टर, do you think the patient will still survive easily? No. That's the reason to a good extent we use sublingual tablets and orodispersible tablets. उनमें से कुछ लोगों ने शायद नाम सुना होगा ऑफ द ड्रग नाइट्रोग्लिसरिन. Have you heard about the term nitroglycerin? Nitroglycerin यूज होता है so that it can immediately help to take care of the situation. अच्छा, other than nitroglycerin, other than myocardial infarction, let's take a simple example that the patient is suffering from ulcer. उसको टंग पे अल्सर हुआ है. So अभी आपको अल्सर टंग पे हुआ है, so where you want the drug to act? अगर आपको अल्सर टंग पे हुआ है, आपको चाहिए कि आपका ड्रग जो भी है वो ड्रग भी टंग के ऊपर ही एक्ट करना चाहिए. Am I correct? ड्रग को उसका थेरेपेटिक एक्टिविटी टंग के ऊपर ही दिखाना चाहिए. So अगर ड्रग को उसका थेरेपेटिक एक्टिविटी टंग के ऊपर ही दिखाने का है खुशी, then very obvious I want my drug to be released on the tongue only. समझाता हूँ कैसे. Let's assume मेरे को लेग पेन हो रहा है, करेक्ट ऋषिकेश, दिस इज फार्मास्यूटिक्स. अगर मुझे जॉइंट पेन हो रहा है तो नो डाउट हम लोग पैरासिटामोल के टैबलेट्स खाते हैं व्हिच इज अ पेन किलर. हम लोग कॉम्बिफ्लैम के टैबलेट्स खाते हैं व्हिच इज अगेन अ पेन किलर. बट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी मुझे जॉइंट पेन होता है तब मैं आयोडेक्स वो जॉइंट पे लगाता हूँ ना. मैं आयोडेक्स खाता तो नहीं हूँ. Am I correct? Do I eat Iodex? Do I eat Iodex public? No. I just apply Iodex on the joint pain where I am suffering from it. So what I'm trying to address is whenever you have a local pain, जब भी कभी आपको एक स्पेसिफिक साइट पे पेन हो रहा है तो आप वहीं पे थेरेपेटिक एप्लीकेशन के लिए ड्रग अप्लाई करते हो. On same grounds, when you are having ulcer on tongue,
you will prefer a tablet which will act on your tongue only. Am I correct? इसके लिए एक स्पेसिफिक नई टेक्नोलॉजी की टैबलेट्स बनी थी which was ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स. तो बेसिकली अभी ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में करते क्या है, ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स में टंग के ऊपर वो टैबलेट्स को रख देते एंड वो टैबलेट अपने आप टंग के ऊपर डिसॉल्व हो जाता है. Once the orodispersible tablet dissolves on the tongue, can I say it will give its therapeutic application? Can I say it will help you to solve the problem? Can I say the patient will recover from ulcer? I hope it's very clear. We are not going too fast. The speed is okay with everyone. Just for information, again, and I have shared a registration form in the chat box. I have filled the same registration form in the message section of this particular video. This form is supposed to be filled by all those who wish to sit subsequent demo lectures. अगर आपको आगे भी demo lectures बैठने हैं तो please आप ये form fill कर दीजिए. Let's go further. I hope the speed is okay. सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी बाउंसर नहीं जा रहा है, कुछ भी और कर नहीं जा रहा है. Let's go further. Many times आपने देखा होगा बहुत सारे टैबलेट्स एकदम फ्लैट होते हैं, they don't have a specific surface. फ्लैट टैबलेट्स. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कॉनकेव टैबलेट्स देखने मिलते हैं. कॉनकेव, नेवर कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स टैबलेट्स कभी भी नहीं होते. कॉनकेव टैबलेट्स आपको एक बार देखने मिलेंगे बट आपको कॉन्वेक्स टैबलेट्स देखने नहीं मिलेंगे. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ कॉनकेव टैबलेट और कॉन्वेक्स टैबलेट्स? कॉनकेव और कॉन्वेक्स टैबलेट्स बनाने से क्या ड्रग का डिसोल्यूशन बेटर होता है? जिसने भी टर्मिनोलॉजी सुनी हो, बहुत लोगों को ये टर्म्स पता भी नहीं होंगे, डिसोल्यूशन एंड ऑल. डोंट वरी, एज वी प्रोसीड फर्दर वी विल टच अपॉन ईच एंड एवरी टर्म. बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जब भी पेशेंट को एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स टैबलेट दिया जाता है, जब उसका सरफेस एरिया स्पेसिफिकली चेंज किया जाता है, कैन आई से वो फ्लैट से अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो रहा है, पहले फ्लैट टैबलेट था, अब वो कॉनकेव हो गया है, तो इसका कुछ तो रीजन होगा. ऐसा तो है नहीं कि भाई उनको अच्छा लग रहा है तो उन्होंने कॉनकेव टैबलेट बना दिया. एक्सीलेंट. Many times a flat tablet would get swallowed easily, right? वो आपके बॉडी में कहीं भी आपके GI tract में it's not going to cause a problem. So flat tablets are more preferred क्योंकि उसकी thickness कम होती है. Can I say that? I hope you are able to understand the difference. Flat tablet हमेशा flat रहते हैं. They are same as like your पापड़, एकदम पतला, सीधा साधा, जलेबी फाफड़ा जेठालाल वाला. But when you talk about concave tablets, वो ऐसे हाफ कॉनकेव होते हैं ऊपर नीचे. दैट्स द रीजन उनका थिकनेस बढ़ जाता है. अभी आप ही सोचो, इफ यू आर अ पेशेंट, इज इट इजी फॉर यू टू टेक अप टैबलेट्स व्हिच आर मोर थिक? क्या आप प्रेफर करोगे वैसे टैबलेट्स जो ज्यादा थिक है? अ बिग नो, राइट? वी ऑल प्रेफर टैबलेट्स व्हिच आर नॉट थिक. So understand the difference between when you are having a thick tablet in place and when you are having a thin tablet in place. जब भी thin tablet रहेगा तब it's going to be far more better compared to a thin tablet in place. Crystal clear, friends? Can we go further? Thanks a lot. Thanks a lot, Abhay. Going further, when we talk about tablets, tablets में हमेशा कभी-कभी आपने देखा होगा कि अलग-अलग लेयर ऑफ ड्रग्स होते हैं. You might have seen tablets कभी-कभी बाई-लेयर्ड होते हैं. एक साइड का टैबलेट का कलर अलग होता है, दूसरे साइड का टैबलेट का कलर अलग होता है. So why do we have bi-layered tablets in place? Bi-layer टैबलेट बनाने में अच्छा लगता है. Do they give it gems like color? Is that the reason? लोग जेम्स जैसा कलर दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? कि जेम्स है तो सबको अच्छा लगेगा एंड एवरीवन विल ईट. इज दैट द रीजन? नो. मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट एक ड्रग, लेट्स से लेवोसेट्रेजिन अलोंग विद मोंटेलुकास्ट. अभी हम लोग थोड़े इंडस्ट्री बेस्ड एग्जांपल्स पे जा रहे हैं. ओके, सो बी केयरफुल एंड बी ऑब्जर्वेंट एट द सेम टाइम. चीजों को ऑब्जर्व करो. व्हेन वी टॉक अबाउट लेवोसेट्रेजिन एंड मोंटेलुकास्ट, लेवोसेट्रेजिन एंड मोंटेलुकास्ट आपस में इनकम्पैटिबल है. व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्पैटिबल? इनकम्पैटिबल का मतलब ये होता है कि हम अगर वो दोनों चीजों को एक साथ रखेंगे then it is not preferred. वो दोनों में से एक डिग्रेड हो जाएगा. Am I correct? Incompatibility means you cannot keep both of them together. That's the reason you make a bilayer tablet. तो लेवोसेट्रेजिन और मोंटेलुकास्ट इनकम्पैटिबल है आपस में, इसके लिए उसका bilayer tablet बनता है. Now why one of the layer is colored and why another layer is uncolored is just to have a demarcation. कि भाई कौन सा लेयर का कलर क्या है, इसके लिए दोनों लेयर अलग बनाए जाते हैं. Now try and understand this. If you pick up any levocetirizine montelukast tablets from the market, there are only two companies जिसके levocetirizine montelukast के tablets bilayered है and at the same time they have one layer being colored, that is Zydus and Cipla. सिर्फ ये दोनों की ही levocetirizine montelukast के tablets bilayered है. Okay.
Except Cipla and Zydus, बाकी जितने भी pharmaceutical companies है, take up any pharmaceutical companies except these two, उन सब के Levocetirizine और Montelukast के tablets monolayered है. They say that these two drugs are not interacting. We have stabilized them. While Zydus and Cipla say that no, these two drugs are interacting with each other. That's the reason we have two different tablets in place. Just to help you understand, peptic ulcer मतलब मुंह में छाले आ जाना. Ulcer हो जाते हैं ना. Many times you're not able to eat spicy things. You get typical, you know, boils on your tongue. So you feel a lot of acidity. आप कुछ भी खाते हो तो आपको ज़्यादा spicy लगता है. That was it. So that was one particular part when we talked initially. So basically a bilayer or monolayer tablet banate. That's the reason when you go to define tablets, they might be flat, they might be having biconvex or concave. Unit dosage form, which basically means that it's always one tablet supposed to be taken at a time. अब ये tablets बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड है. तो टैबलेट्स बनाने के लिए अलग अलग मेथड में कौन से मेथड्स है, एक ही ड्रग रहेंगे या अलग अलग ड्रग्स रहेंगे, that will check in the upcoming slides. Basically these tablets most of the time are with diluents. Now what do you mean by diluent? Anyone who knows diluent का मतलब क्या होता है? क्या हम में से बहुत सारे लोगों ने diluent सुना है? Perfect, खुशी. Iodine is a semi solid dosage form. Diluent basically the word as it goes. Diluent basically means that आपके टैबलेट्स में या आप कोई भी और चीज ले लो, उसका वेट सबसे ज्यादा होता है. Let it be tablet, let it be capsule, let it be any other dosage form, the amount of quantity of diluent will be the highest whenever it comes to any specific tablets. अच्छा, when it comes to tablets में most of the time diluent क्या use होता है? What is the diluent most of the time in a tablet? Have you heard about different diluents like microcrystalline cellulose? जैसे जैसे आगे जाएंगे थोड़ी और क्लैरिटी आती जाएगी, डोंट वरी. Microcrystalline cellulose is one of the widely used diluent. Along with microcrystalline cellulose, perfect, सबका favorite, जिसका नाम सबको याद होता है, which is lactose. Lactose is another diluent which is widely used. Now let's think from entrance point of view. Entrance में question ये नहीं आता which among the following is a diluent. कभी कभी indirectly आ जाता है, but not that majorly. Entrance will focus around what is the branded name of this diluents. जैसे लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज का जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है दैट इज टैबलेटोस. सो हमको ये सारे ब्रांड नेम्स याद रखने पड़ेंगे व्हेन इट कम्स टू जीपैट, नाइपर, आईसीटी, बिट्स, मणिपाल एंट्रेंसेस. सेम वे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का जो ब्रांड नेम है दैट इज एविसेल. सो स्टेप बाय स्टेप नॉट ओनली द केमिकल नेम जैसे माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज और लैक्टोज, you also need to remember the brand names of those individual products. क्योंकि एंट्रेंस में स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है which revolves around brand name. Am I clear till here, my friend? Can we proceed further? Everything is perfect. Let's have a quick discussion with regards to what are the advantages and disadvantages of a tablet. कंसिडर आप एक सिरप लेके जा रहे हो, सिरप का बॉटल इजीली ब्रेक हो सकता है, राइट? सिरप का बॉटल ट्रांसपोर्ट के टाइम पे आपके बैग में है, आप ट्रैवल कर रहे हो, देयर इज अ चांस दैट सिरप्स बॉटल माइट जस्ट ब्रेक डाउन. बट व्हेन यू कंपेयर दैट सिरप बॉटल अगेंस्ट अ टैबलेट, क्या टैबलेट हाथ में से गिर जाता है तो टूट जाता है क्या? नो, टैबलेट हैज गॉट इनफ हार्डनेस इन प्लेस जिसकी वजह से टैबलेट सर्वाइव कर जाता है. Am I correct? So can I say when we talk about tablets, these are basically tamper proof. ये easily break नहीं होते. That's what you mean by the word tamper proof. Tamper proof tablets मतलब those tablets which don't break down easily. They will be able to sustain for a good amount of time. After tamper proof tablet, the next thing to understand is whenever you are using tablets, you need to ensure that आप उसका bitter taste mark करो. आपने बहुत बार बहुत सारे ड्रग्स खाए रहेंगे, बहुत सारे टैबलेट्स खाए रहेंगे एंड यू नो दे आर वेरी बिटर इन टेस्ट. सो इन ऑर्डर टू मास्क द बिटर टेस्ट, अगर आपको कोई भी टैबलेट के ड्रग का टेस्ट बहुत खराब लगता है, उप्स दिस इज टू बैड, व्हाट डू यू डू? आप हमेशा शुगर लेके बैठते हो साथ में, राइट? टैबलेट्स खाने के टाइम पे या तो शुगर नहीं रहेगा तो यू विल हैव सम टिपिकल something which is going to add taste. But when you are making a tablet and when you know that भाई ये ड्रग का टेस्ट खराब है, तो आप क्या करते हो? टेस्ट इंप्रूव करने के लिए आप उसमें स्वीटनर ऐड करते हो, राइट? स्वीटनर इज समथिंग व्हिच विल इंपार्ट स्वीटनेस टू द टैबलेट. अगर स्वीटनर नहीं तो आप उसको फ्लेवर ऐड करोगे, बट यू विल इंश्योर दैट द टैबलेट इज टेस्टिंग बेटर एंड बेटर. एम आई करेक्ट? कैन यू प्रोसीड फर्दर? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? चलो माय फ्रेंड्स, अगेन
When you talk about tablets का सबसे बड़ा advantage since उसको सिर्फ compress करना होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है. Cost wise also tablets are very much cheap. I hope you all have observed that tablet का एक strip carry करना, if you are supposed to carry a strip of a tablet, don't you think it is very easy? You can carry a strip anywhere. आप pocket में डाल दो, bag में डाल दो, you can carry it. But is it easy to carry a bottle of syrup? क्या आप syrup का bottle easily carry कर सकते हो? No. You always have the risk that it might just break down. Am I correct? Am I correct? Again, when you talk about product identification, बहुत सारे लोग टैबलेट्स को उसके कलर से पहचानते, राइट? यू माइट बी हैविंग योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो लोग ऐसे बोलते हैं वो लाल कलर का गोली देना ना, ती ब्लॅक कलर का नाही होता, सॉरी, ती माझी ब्राऊन कलरची पिशवी होती, ती माझी रेड कलरचा औषध होता. Remember, they have that specific colored way to identify, because when it comes to our grandfathers and grandmothers, they never think to a good extent about the name of the drug. They only identify it with the help of the color. तो same way हमको color को target करके चलते रहना. If we have clarity about what color is being used, then that's true. Why am I saying this? Tablets में से बहुत बार question entrance में ये आता है, give the name of the dye which is used in coloring of tablet. हम लोग ने बहुत सारे tablets खाए रहेंगे जो अलग अलग कलर के होते हैं. हाँ, बचपन में हमको मॉम डैड बोलते थे अरे ये तो जेम्स है, खा लो, which is not the case, okay? Which is not the case. So when you talk about tablets, आगे जैसे हम लोग जाएंगे तो tablets में जो भी dyes यूज होते हैं, जो भी कलर्स यूज होते हैं, वो सबकी एक अलग लिस्ट है which we have to remember from entrance point of view. It is required. Other than that, whenever you talk about drugs which require special release, आपने घर पे have you heard about some terminologies like sustained release tablet? You might have, you might be having diabetic patients or hypertensive patients in home. घर पे कोई hypertension वाला patient है, diabetes वाला patient है, आज से 10, 15, 20 years back, patients were taking 3 to 4 tablets a day. दिन के 3 से 4 टैबलेट खाते थे वो. Now those same patients are eating just 1 to 2 tablets a day. ऐसा क्यों? डोज कम कर दिया क्या? नहीं, ड्रग तो लोग आज भी उतना ही खा रहे जितना तब भी खा रहे थे. Then what is the reason? Why the patient has decreased the frequency of dosing? Amount of dose वो जितना दिन में पहले ले रहा था, अब वो कम टैबलेट क्यों खा रहा है? Simple reason being, there is a new concept which is known as sustained release, modified release, controlled release, delayed release. ऐसे बहुत सारे आगे जाके समझाऊंगा बेसिकली ये होता क्या है. अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि जो भी ये मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म है, सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल्ड रिलीज, मॉडिफाइड रिलीज, बेसिकली दे गिव यू अ बिगर एडवांटेज कंपेयर टू इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म्स. अब ये समझने का ट्राई करते हैं कि भाई इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स क्या होता है और सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स क्या होता है. Immediate release tablets. Immediate release tablets means that you took a tablet, आपने दवाई खाया, and the entire drug is released. That is immediate release tablet. समझा क्या किया? मैंने टैबलेट खाया और within 30 minutes, okay? I repeat, most of the time the timeline is within 30 minutes. 30 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ड्रग डिसॉल्व हो गया. That is what you mean by immediate release tablets. Crystal clear? Now, when you talk about sustained release tablet, सस्टेन रिलीज टैबलेट में पूरा का पूरा ड्रग रिलीज होने को 8 घंटे भी लग सकते हैं. तो बेसिकली अगर मेरे को आपको इसको एक डायग्रामेटिक वे में एक्सप्लेन करना है, लेट मी टेक यू टू द बेस where you all have read it, but probably we just need a recap. Have we all studied the subject of dispensing pharmacy? क्या हमने कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे सुने थे, थेरापेटिक विंडो, मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम टॉक्सिक कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी सुने थे ही. बेसिकली ये सारी चीजें होती क्या है? For your information, GPAT, NIPER 22 में क्वेश्चन आया था, what is the full form of MSc, MIC and all. So MSc क्या होता है, MIC क्या होता है, MTC क्या होता है, सब बात कर लेते ब्रीफली. अभी दो दिन पहले का ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. And again for your information, the predictions based on observation were so accurate that 160 questions out of 200 questions of NIPER 22, yes, 160 questions out of 200 questions of NIPER 22 were either a part of our notes, test series, live lectures, recordings, somewhere or the other, whatever was discussed as it is. Same option, same question, everything as it is. Let's wait for the result.
नाइपर 2021 का आर बेस्ट रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक 12. नाइपर 2020 का आर बेस्ट ऑल इंडिया रैंक वाज 01. Open category everything. 01 was in pharma MBA, 02 was in MS category. So that's have been our major target. We want you all to end up with Niper only. Why Niper? वो मैं आपको end में बता दूंगा briefly. Come back to this. So here basically on x-axis we have got time. I hope the graph is okay with you all. On y-axis we have got concentration. ठीक है मित्तल? Kanaya Tejas. So you have these two x-axis which are going flat. So this is minimum effective concentration. What do you mean by minimum effective concentration? Minimum effective concentration means that जब तक आपका ड्रग इसके बाहर इसके ऊपर नहीं आएगा, जब तक ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन आपके बॉडी में इसके ऊपर नहीं जाएगा, अज्यूम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ऊपर तक गया and then it came down. Okay, this is one type of dosage form where you will get a drug release. थोड़ा इसको और belly shape कर देते हैं. Okay, assume that this is a belly shape, mountain समझ के चलो. तो ड्रग आया बॉडी में, let's say this was typically 30 minutes. 30 minutes के बाद ड्रग मेरा थेरापेटिक विंडो में गया. अच्छा, अब ये थेरापेटिक विंडो क्या होता है? Before we talk about what is therapeutic window, let's talk about maximum safe concentration या minimum toxic concentration. It basically means that अगर आपका ड्रग एक स्पेसिफिक लेवल क्रॉस कर देता है, let's see how I am talking about that. Let's say आपने टैबलेट लिया, लिया और टैबलेट ने ये लेवल क्रॉस कर दिया. If something like this happens where your tablet is crossing this particular mark, then it has basically entered into toxic region. Anything in excess is poison. Am I correct? आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पैरासीटामोल के बारे में पढ़ा होगा. You should not consume more than 2500 mg of paracetamol in a day. अगर आप पैरासीटामोल 250 mg से ज्यादा, मतलब 2.5 ग्राम से ज्यादा अगर आप पैरासीटामोल इन अ डे कंज्यूम करते हो, इट कैन लीड टू टॉक्सिसिटी. आगे आएगा, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर. What it basically means? It basically means that a drug is safe only till a specific concentration. That's the reason you have something known as maximum safe concentration. इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए आपके ड्रग in body. It has to move out. Other terminology for maximum safe concentration is minimum toxic concentration. मतलब ये एकदम मिनिमम लेवल है टॉक्सिसिटी स्टार्ट होने का. अगर इसके ऊपर गए तो टॉक्सिसिटी और ज्यादा हो सकता है. I repeat, if you cross this level, it might just happen that the patient might suffer from more toxicity. Am I crystal clear, my friends? Tejas, Mittal, Kanaya, is it very much clear? Jashandeep, Khushi, Ganda. All right, Ganesh, let's go further. ठीक है हीत, चल ऋषिकेश, let's go further वैशाली. तो एक हो गया अपना सिंपल इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म. इमीडिएट रिलीज डोजेज फॉर्म में क्या होता है? टैबलेट लिया, टैबलेट ने 30 मिनट्स बाद अपना थेरापेटिक विंडो एंटर किया. थेरापेटिक विंडो बेसिकली मींस द विंडो व्हिच इज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन. मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच का जो विंडो है, उसके बीच का जो अमाउंट ऑफ ड्रग है, दैट इज बेसिकली नोन एज थेरापेटिक विंडो. याद रहेगा बॉस, याद रहेगा. व्हाट डू वी मीन बाय थेरापेटिक विंडो? यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल. यस, ये साल नाइपर 22 में फुल फॉर्म आया था. यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऑन दोस पर्टिकुलर ग्राउंड्स एज वेल. थेरापेटिक इंडेक्स अलग है, थेरापेटिक विंडो अलग है. थेरापेटिक रेंज एंड थेरापेटिक विंडो कैन बी सेट टुगेदर. इंडेक्स इज रेशियो, therapeutic window is ratio, therapeutic index is a ratio, just like you might have heard something about LD50 and ED50. अगर सुना है, lethal dose and effective dose. तो जब उस पे जाएंगे तब in detail बात करते हैं. That time I will touch upon that as well. Alright, let's come back over here. So therapeutic window basically वो था which is the area between minimum effective concentration and maximum safe concentration. Now before we went on to this graph, the motto to go behind this graph was we were going to talk about sustained release dosage form. Sustained release dosage form में क्या होता है? आपने टैबलेट लिया, drug will enter the blood at a specific time and for a period of time आपके बॉडी में ड्रग एक स्पेसिफिक लेवल पे ही रहता है. इट विल स्टे एज अ प्लेटो. वो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रहता है
and after a specific amount of time its concentration goes decreasing. This is what you mean by sustained release dosage form or controlled release dosage form. Can anyone help me to understand इसका advantage क्या है over immediate release dosage form? Immediate release dosage form में क्या होता है? Immediate release dosage form में टैबलेट लिया, ब्लड के अंदर गया, बाहर चला गया, आपको वापस 2 घंटे बाद टैबलेट लेना पड़ेगा. Again it will go in blood, it will stay in for some time, again it will go out. Again it will go in blood, आप third dose दोगे तभी वापस it will go out. So with immediate release dosage form the frequency of dosing is high. आपको बार बार टैबलेट लेना पड़ता है. समझ में आ रहा है? But when you talk about simply your sustained release dosage form, sustained release dosage form में आपको बार बार टैबलेट नहीं लेना पड़ता. You take it once, it will sustain. मतलब समझ में आ रहा है? The word itself is saying sustain. मतलब वो बॉडी में लंबे टाइम तक सस्टेन करने वाला है. You are not supposed to administer the drug again and again to the patient. Is it crystal clear? Did we get the difference between sustained release tablet and immediate release tablet and all? मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. Although this question should come minutes down the line when we talk about different tests, disintegration test, dissolution test and all parameters क्या होते हैं, तभी वो क्वेश्चन आना चाहिए ideally. But I'm willing to ask you this question now only because I think you will be समझने का ट्राई करो. Whenever you take immediate release tablet ना, immediate release tablet जैसे पैरासीटामोल टैबलेट हो गया अपना, मैंने immediate release tablet लिया, आप जैसे वो टैबलेट कंज्यूम करते हो, the moment you swallow this tablet goes into your blood, it breaks down entirely. पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है immediate release tablet and एक साथ वो पूरा ड्रग रिलीज कर देता है. करेक्ट? दैट्स द रीजन सिंस पूरा ड्रग DR मतलब ड्रग रिलीज मेरा बनाया हुआ है, ऐसा ऑफिशियल नहीं है. पूरा ड्रग एक साथ रिलीज हो रहा है. दैट्स द रीजन यू हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे ड्रग आता है बॉडी में एक हायर कॉन्सेंट्रेशन तक जाता है एंड देन इट मूव्स आउट. बट जब हम लोग एक सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट की बात करते हैं या मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट की बात करते हैं या डिलेड रिलीज की बात करते हैं, ये सारे टैबलेट्स ना कभी भी ब्रेक नहीं होते. अंडरस्टैंड दिस, दे नेवर ब्रेक इन द सिस्टम. वो सबके अंदर एक स्पेसिफिक पॉलीमर होता है. सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म एक पूरा का पूरा सेपरेट चैप्टर है. सस्टेन रिलीज सिर्फ टैबलेट में ही नहीं होता है. सस्टेन रिलीज कैन हैपन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन. आप इंजेक्टेबल्स में भी सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट बना सकते हो. व्हेन वी विल एंटर इनटू पैरेंटरल्स तब हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. बट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर. सस्टेन रिलीज टैबलेट्स में जो पॉलीमर होते हैं ना, वो पॉलीमर जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, दोस पॉलीमर स्वेल. अब मेरे को एक बात बताओ, पॉलीमर स्वेल होएगा तो क्या होएगा? आप सब लोग ने जेलेटिन देखा होगा. अगर जेलेटिन स्वेल होता है तो क्या होता है? What happens if gelatin swells? It doesn't mean that sustained release tablet में gelatin is a polymer. Don't confuse it. वो अलग है, ये अलग है. Since आप लोगों ने gelatin को swell होते देखा रहेगा पहले, वो सोच के मैं आपको पूछ रहा हूँ कि gelatin को जब आप पानी में डालते हो, gelatin starts cross linking. अगर आपने जेल बनाया रहेगा, कॉलेज प्रैक्टिकल्स कुछ हुआ है, gelatin cross link होता है, gelatin swell होता है. Moment anything cross links or moment your polymer swells, अगर polymer swell हुआ तो क्या उसके अंदर का ड्रग बाहर आता है क्या? अगर पॉलीमर स्वेल हो जाएगा तो क्या पूरा का पूरा ड्रग एक साथ बाहर आ पाएगा? वैशाली, गीत, मित्तल, अभय, मानसवी, माधव, जशनदीप, क्या ड्रग एक साथ बाहर आ पाएगा? इफ द टैबलेट इज स्वेलिंग, इफ द पॉलीमर इज swollen, will the drug come out? No. वो पॉलीमर ड्रग को पकड़ के रखता है, वो उसको धीरे धीरे बाहर जाने देगा. एक साथ पूरा का पूरा ड्रग बाहर नहीं जाता. सिंस एक साथ पूरा का पूरा ड्रग बाहर नहीं जाता, when it comes to sustained release dosage form, आपके ड्रग का concentration flat, it stays the same throughout that particular amount of time. What the reason? What the reason why sustained release dosage form में ड्रग constant रहता है? Is everyone crystal clear? कोई भी रट नहीं रहा है. उर्वी, गौरव, अभय, प्रांजल, is everything crystal clear? Now my question to you, जब हम लोग immediate release dosage form की बात करते हैं ना, immediate release tablets, there is a test which is known as disintegration test. Disintegration test. तो जब हम evaluation of tablets में जाएंगे, that time we are going to talk more in detail about it. So when we talk about disintegration test basically means that आपने टैबलेट लिया, टैबलेट लेने के बाद वो टैबलेट को ब्रेक होने को कितना टाइम लगा, दैट इज बेसिकली डिसइंटीग्रेशन टेस्ट. कि भाई टैबलेट ब्रेकडाउन को
how much time has it taken. That's what you mean by the word disintegration test. Now understand this. क्या इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स ब्रेक होने वाले हैं मित्तल? इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स ब्रेक होने वाले और भी? हाँ, अभी तो थोड़े टाइम पहले बोला इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स 30 मिनट्स में पूरा का पूरा ब्रेक हो जाते हैं एंड दे रिलीज देयर ड्रग्स. एम आई करेक्ट? अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग ने बात किया. बट few minutes back we also spoke that sustained release tablet को हम लोग जैसे ही पानी में डालते हैं, sustained release tablet को पानी में डालने के बाद उसका पॉलीमर स्वेल होता है. Now my question to you is, क्या sustained release tablet टूटती है? क्या sustained release tablet का breakdown होता है? Yes or no? That is my question to you. Does sustained release tablet break down into multiple pieces? आप घर पे पैरासीटामोल का टैबलेट लो, आप उसको इजीली तोड़ पाओगे, इट विल ब्रेक विद इन सेकेंड्स. बट आप एक मेटफॉर्मिन का टैबलेट ले लो, अगर घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट है, आप मेटफॉर्मिन का टैबलेट ले लो उसके स्ट्रिप में से, और आपको मेटफॉर्मिन के सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का स्पेसिफिकली सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट को थोड़ा टाइम पानी में रखो. ऑब्वियसली इमीडिएट रिलीज टैबलेट भी आप पानी में ही डालोगे, राइट? इट गोज इनटू योर स्टमक, यू कंज्यूम इट विद वाटर, वेयर इट इज गोइंग टू ब्रेक. सेम वे मेटफॉर्मिन का जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, अगर मैं मेटफॉर्मिन के सस्टेन रिलीज टैबलेट को पानी में डालता हूँ, विल इट स्वेल? यस, इट विल स्वेल. If it is going to swell because of polymer, will it break down? A big no. A big no. Sustained release tablets, modified release tablets, these all tablets never break down. Okay? Please ये याद रखना. एक बहुत important entrance question है. You can find this question across any entrance. GPAT, NIPER, ICT, BITS, Manipal. इस टाइम के नाइपर के पेपर में और एक क्वेश्चन आया था. आई विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स, आई विल डिस्कस दैट एज वेल. नाउ माय क्वेश्चन टू यू गोइंग फर्दर इज, देयर इज अ कांसेप्ट व्हिच इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन टाइम. डिसइंटीग्रेशन टाइम इज बेसिकली वन ऑफ द इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर अ टैबलेट. आप जैसे ही टैबलेट बना लेते हो, आपको चेक करना पड़ता है कि भाई आपके टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम कितना आ रहा है. अगर मैं पैरासीटामोल का टैबलेट बना रहा हूँ, तो मैं चेक करूंगा whether paracetamol tablet is breaking down or not. Correct? Disintegration time is basically the time taken for the tablet to break down. Tablet टूटने को कितना टाइम लग रहा है, that is what you mean by the word disintegration time. So can I say disintegration time can be done for immediate release tablets? Can I say disintegration time can be a valid parameter for immediate release tablets? Yes, makes sense. बट क्या डिसइंटीग्रेशन टेस्ट आप कभी भी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट के लिए करोगे क्या? विल यू डू डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स? दैट इज द क्वेश्चन. एंट्रेंस में क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? इसमें से कौन से टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो वेरी ऑब्वियसली ऑल योर मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म, सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म, डिलेड रिलीज डोजेज फॉर्म, वो सारे टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं होता है. एम आई क्रिस्टल क्लियर माय फ्रेंड्स? इज एवरीवन क्लियर? क्यों डिसइंटीग्रेशन टेस्ट सस्टेन रिलीज टैबलेट्स के लिए नहीं होता है? अंडरस्टैंड, लैकमैन एक बहुत मोटा बुक है, केडी त्रिपाठी एक बहुत मोटा बुक है. प्रैक्टिकली 4 साल का सिलेबस जीपैट के लिए जो हमको रेडी होना है, दैट इज पॉसिबल. Okay, that is possible provided you know which areas you are supposed to focus upon. आप एक एक लाइन पढ़ते बैठोगे, then it's not going to work out. Hard work is important, but hard work along with smart work is more important. अगर सिर्फ हार्ड वर्क से काम हो जाता तो आज शायद कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स, इंडिया के फार्मर्स, वो सब लोग ज्यादा अमीर होते. सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वही करते. बट इफ यू कपल अप दैट हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, मेहनत तो करना है, बट मेहनत कौन से डायरेक्शन में करना है, कौन से सब्जेक्ट को लेके करना है, वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर रीडिंग सब्जेक्ट्स लाइक क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जहां से सिर्फ 2 या 4 क्वेश्चन आने वाले, then it's not making sense. Focus on subjects like pharmacology, focus on subjects like organic chemistry, focus on subjects like pharmaceutical chemistry, which make up almost 63 questions out of 125 questions, which basically means that they make up your 50% of GPAT paper. Yes, 50% of GPAT paper just revolves around this. Wait till the end. I'll show you from where I'm talking about all these things. I'm not saying something which is not there. सब कुछ है, बताऊंगा ये सारे एनालिसिस कहाँ से हुए हैं, कहाँ पे. I display everything to you. Don't worry. Can you proceed further? I hope everyone is enjoying it. Just for information, I'm again repeating the same thing.
I had pinned up one feedback form in the chat box. That same registration form, I'm sorry, I've pinned in the chat box. I've reshared it. Fill in this particular feedback form if you are willing to attend subsequent demo lectures. आगे के demo lectures के बारे में आपको inform रहेगा. Just fill up this particular form. Let's go further. So एक typical चीज समझ में आ गया कि बहुत sustained release dosage form के लिए, modified release dosage form के लिए disintegration test नहीं होता. All these advantages which are being mentioned over here is already known to you. हम लोग ने अभी थोड़े टाइम पहले ही बात किया कि टेम्पर प्रूफ होता है टैबलेट्स. यू कैन मास्क और हाइड द टेस्ट. कॉस्ट कम होता है, वेट कम होता है. आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कलर. इट इज इजी टू पैक एंड ट्रांसपोर्ट शिप. स्वैलोइंग के लिए भी इजी होता है. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर एक बिटर टेस्ट वाला ड्रग है, आप उसका सिरप बनाओगे कि टैबलेट बनाओगे? यही होता है एग्जाम में. व्हेन आई वाज एट नाइपर हैदराबाद में हमको 9 मार्क के लिए सिर्फ 9 लाइन लिखनी होती थी. वी हैड टू बी वेरी मच स्पेसिफिक. घुमा घुमा के कुछ नहीं लिखना है. यू हैव टू बी स्पेसिफिक. तो वहां पे क्वेश्चंस कैसा रहता था कि एक बिटर टेस्टिंग ड्रग है, आप उसका सिरप बनाओगे, टैबलेट बनाओगे, कैप्सूल बनाओगे. व्हाट इज इट व्हिच यू आर गोइंग टू मेक फॉर दैट बिटर टेस्टिंग ड्रग? आप वो बिटर टेस्टिंग ड्रग के लिए क्या बनाओगे? व्हाट आर यू गोइंग टू मेक for that bitter tasting drug? Quick. Tablets or syrup? Don't you think syrup will come more in taste with the tongue? Syrup के अंदर taste masking थोड़ा सा difficult हो जाता है. Don't you think so, तेजस? But when you compare it with tablet, tablet में आप coating भी कर सकते हो. Tablet तो आप swallow कर जाते हो. So that goes in immediately. Excellent primer. आप coated tablet बना दो. Again most importantly you need to check अपना drug stable किसके अंदर है. अपना ड्रग सिरप में ज्यादा स्टेबल है कि टैबलेट में ज्यादा स्टेबल है? अच्छा, वन मोर क्वेश्चन टू यू. इफ गिवन अ ड्रग which is a bit unstable, what will you prefer? Will you prefer making a tablet for that particular drug or will you prefer making a syrup for that particular drug? Since एक colleague ने stability पे बात की, that's the reason I just thought of asking you that. सिरप बनाना चाहोगे कि आप टैबलेट बनाना चाहोगे for a drug which is a bit unstable? Very obviously, if the drug is a bit unstable, most of us will prefer to make a tablet out of it. Syrup is always prone to microbial growth. Am I correct? सिरप में हमेशा एक्वियस बेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. एक्वियस बेस नहीं होगा तो सिरप में लिक्विड होगा. लिक्विड नहीं होगा तो आपको स्वीटनर तो ऐड करना ही पड़ेगा. In all these situations where you have so much in your particular syrup, the chances of it getting degraded is more. Am I correct? चलो, happy to see you all have the base connected with you. Going further, ये टैबलेट के एडवांटेजेस है, टोटली अग्रीड. बट व्हाट अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट? क्या आप टैबलेट को इजीली स्वैलो कर सकते हो? नो. सो स्वैलोइंग इज अ प्रॉब्लम. सेकंड, बहुत सारे ड्रग्स है ना, इजीली कंप्रेस नहीं हो पाते. यू कैन नॉट कंप्रेस देम क्योंकि वो पाउडर का नेचर ही अलग होता है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट द टर्म एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, पॉलीमॉर्फ्स? ये सारे टर्मिनोलॉजी सुने हम लोगों ने. फिजिकल फार्मेसी में स्टार्टिंग में सुना होगा. वैसे तो हम लोग ने पॉलीमॉर्फ के बारे में 10th स्टैंडर्ड में भी सुना था. करेक्ट मित्तल, गुड वन. हम लोग ने एमॉर्फस, हैव यू रिमेंबर्ड अबाउट पॉलीमॉर्फ? हम लोग ने सुना था रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज वी हैव हर्ड इन द पास्ट. ऑन सेम ग्राउंड्स देयर आर फ्यू ड्रग्स जिसका एमॉर्फस नेचर होता है, जिसका पॉलीमॉर्फिक नेचर होता है, आप जिसको इजीली कंप्रेस करके टैबलेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. They cannot be compressed easily into a tablet, which otherwise happens with other drugs. यहाँ पे easily नहीं होता. So when you talk about this different disadvantages which comes with your every individual drug, you need to understand tablets is not always preferable. Although आज के डेट में भी अपने pharmaceutical market में 80% dosage form का market is occupied by tablets. Let it be India or let it be any country globally, tablets have a major market. But it's not possible for each and every individual drug. Have you heard the term bioavailability? शायद फर्स्ट ईयर बी फार्म में सुना होगा. How many of us have heard the term bioavailability? Bioavailability का बेसिक मतलब ये होता है that if I take a drug, how much amount of that particular drug is absorbed. That is what you basically mean by the word bioavailability. आप सब लोग ने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी सुना होगा in the first year B farm itself. First pass metabolism basically means that I took a tablet. After taking a tablet, my tablet goes through my oral route. It passes through liver. पता है ना?
आप सबको पता होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लिवर में उसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है ड्यू टू विच सम अमाउंट ऑफ ड्रग इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। एम आई करेक्ट? अगर मैं 100 mg ड्रग देता हूँ तो पूरा का पूरा ड्रग इफेक्टिव होता ही नहीं है, थोड़ा ड्रग अपना लिवर पहले ही बाहर फेंक चुका होता है, इट्स बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, इट्स बीइंग एक्सक्रीटेड, अगर फार्मास्यूटिकल टर्म्स में बोलना है तो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग पहले ही बाहर चला जाता है। Now, when you go to define bioavailability, bioavailability basically means that it is defined as the rate and extent of drug absorbed. मतलब आपने जितना भी ड्रग लिया है उसमें से कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ एंड एट व्हाट रेट। ऐसा नहीं होना चाहिए ना मैंने टैबलेट अब भी खाया और 4 दिन बाद ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट? I need immediate absorption as well, which is always subject to time. So ensure that thing happens parallelly. Now, why am I talking about bioavailability now? Many times the question in entrance is how much amount of drug is being bioavailable in terms of percentage. I hope we all are aware bioavailability का symbol होता है F. Am I correct? हम सबको पता है bioavailability का symbol F होता है. Bioavailability का symbol F होता है. It usually is given in terms of percentage. So if the question is bioavailability का value is in what range, the range is 0 to 1. So let's say if you have taken a particular tablet orally और उन्होंने बोला है कि भाई what percentage of drug is being absorbed, that is 89%. 89% अगर वो लोग bioavailability बोल रहे हैं, they indirectly mean that the value of F is 89 divide by 100. 89% बोला ना, तो 89 को 100 से डिवाइड करेंगे, which basically means that bioavailability का value is 0.89. समझ में आया? Are we all very much clear? No one is rectifying anything. I was coming to that, Mittal. Good one. तो हमको एक बेसिक बायोअवेलेबिलिटी समझ में आ गया, उसको इन टर्म्स ऑफ समझ में आ गया. वी ऑल नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब ड्रग मेरे बॉडी से बाहर फेंका गया है. All those different steps into account. Now understand one thing. Whenever you take anything orally, let it be tablet, let it be capsule, let it be syrup, all those things go specifically through our liver. But when you talk something which is other than tablet, capsule, syrup, and other than the oral route, if you are giving anything to the patient parenterally, what do we mean by the word parenterally? Parenterally मतलब injectable route से. अगर आप पेशेंट को कुछ भी इंजेक्टेबल रूट से देते हो, in that particular case any drug which is given by injectable route, can I say that enters into blood directly? Can I say वो हमारे खून में directly आता है? And if anything given via injectable route enters into our blood directly, what about its bioavailability? उसका bioavailability क्या होगा? Anything which enters into my blood directly, can I say its bioavailability will be 100%? क्योंकि वो लिवर के पास जाता ही नहीं है ना. लिवर कैनॉट थ्रो इट आउट ऑफ माय बॉडी. लिवर का उस पर कुछ लेना देना ही नहीं है. वॉट एवर इज हैपनिंग ओवर देयर इज हैपनिंग प्योरली विथ माय ड्रग देयर एंड देयर इटसेल्फ. So can I say 100% bioavailability for parenteral products or injectable products basically means that F का value will be 1. Am I correct? Am I correct? Now, why did I talk about the concept of bioavailability? Why did I talk about F का value, injectables, parenterals? हाँ, इसके ऊपर से question आता है, but then what's the rationale? Why are we talking about these all terminologies? Coming to the question behind it. How many of us have heard about the drug which is known as itraconazole? शायद हम में से बहुत लोगों ने सुना होगा. Itraconazole is an anti-fungal drug. Okay? Itraconazole एक anti-fungal drug है. Now, my question to you. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, इट्राकोनाजोल का जो ड्रग है ना मेरे दोस्त, इट्राकोनाजोल का आपको मार्केट में ओनली एंड ओनली व्हेन इट कम्स टू इट्राकोनाजोल यू विल ओनली एंड ओनली फाइंड कैप्सूल्स ऑफ इट्राकोनाजोल. आपको इट्राकोनाजोल का टैबलेट नहीं मिलता है मार्केट में. व्हाई नो वन हैज एवर बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग टैबलेट्स ऑफ इट्राकोनाजोल? व्हाट कुड बी द रीजन? इट्राकोनाजोल का टैबलेट क्यों नहीं बनाते? कम ऑन, एनीवन. The question is, the answer is somewhere around what we have just discussed. The reason you do not get tablets of itraconazole is simply one. The major reason behind why tablets of itraconazole are not available is itraconazole when given via tablet is not absorbed.
जब आप उसको टैबलेट के डोजेज फॉर्म में देते हो तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। अब वो क्यों नहीं होता है वो हम लोग जब एंटी फंगल चैप्टर में जाएंगे तब डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। कैप्सूल्स भी आप ओरल रूट से ही दे रहे हो, टैबलेट्स भी आप ओरल रूट से ही दे रहे हो, बट कैप्सूल्स में जब इट्राकोनाजोल दिया जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, बट सेम इट्राकोनाजोल जब टैबलेट में दिया जा रहा है तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। व्हाई? व्हाई? जाएंगे डिटेल में when we go into the chapter of antifungals. Is everything clear to you? Any questions? Anything you wish to ask? Anything you wish to ask? I hope everything is crystal clear till you. Can you proceed further, friends? Yes, yes, yes. All right, let's go further. Just for information, a lot of your friends from Westcop, HK College of Pharmacy, NAT have already joined in, Viratan and all. So if you're planning to join in, feel free to get in. Going to the next part of it, when you talk about disadvantages with tablets, tablets में swallowing is a problem. हर एक ड्रग कंप्रेस नहीं होता है, amorphous nature रहेगा. जैसे हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिक फॉर्म की बात की तो इजीली कंप्रेस नहीं होगा. There are few drugs जो solubilize ही नहीं होते. Dissolution basically means that आपने टैबलेट लिया, आपने टैबलेट को पानी में डाला, how much time it took for the entire drug to dissolve, that is dissolution. Time taken for the drug to dissolve is basically known as dissolution. Crystal clear? Terminology समझ में आया? Terminology समझ में आया? What do you mean by dissolution? अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं. What is the difference between solubility and dissolution? What is the difference between solubility and dissolution? A very bad day you might have a question on this. Very rare, unless and until सामने वाले को पता रहेगा तो ही वो बता पाएगा. Solubility is the amount of drug which goes into a particular solvent. Am I correct? टाटा नमक लिया या कोई ड्रग लिया, वो ड्रग कितना टाइम ले रहा है in order to dissolve, that is basically what you mean by the term solubility. Now what do you mean by the terminology dissolution? Dissolution basically is rate dependent. कितना amount of drug dissolve हुआ in what time. Dissolution is with respect to time, rate at which x amount of drug got dissolved. While in solubility, time is never a factor. Solubility को time से कुछ लेना देना नहीं. Solubility simply means that what amount of drug went in what amount of solvent. Crystal clear? Am I very much clear, my friends? Am I very much clear? Let's go further, further, further. चले boss. Rest I already told you. Bitter tasting drugs को mask करने के लिए flavors और सब add करना पड़ेगा. बहुत सारे ड्रग ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, so there is high chance that they might just get degraded. ऑक्सीजन भी होते हैं सेंसिटिव and you might have also seen photosensitive drugs. What do you mean by photosensitive? Photosensitive drugs basically mean those drugs which might get degraded when they are exposed to light. Photosensitive drugs का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई ड्रग जब लाइट को एक्सपोज हो रहा है वो तभी डिग्रेड हो जा रहा है. You might have seen many drugs, many tablets which are packed in amber colored strips or amber colored bottle. Why? उसको एम्बर कलर स्ट्रिप या एम्बर कलर बॉटल में क्यों रखते हैं? अच्छा लगता है? नहीं, डिजाइन उसको अच्छा लगता है. नहीं, उसको ब्राउन कलर पसंद है इसके लिए एम्बर कलर में रखते हैं. What is the reason of using an amber colored packaging for a particular drug? The simple reason behind using amber colored bottles for some specific type of dosage form is whenever a particular drug is exposed more and more to light, and if the drug is photosensitive, it might just get degraded. वो लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है. आप आपका पैरासिटामोल विटामिन सी का टैबलेट जरा धूप में रख दो 1 घंटे के लिए, देखो क्या होता है. बताओ मेरे को विटामिन सी के टैबलेट को क्या होता है. बस दे आर फोटोसेंसिटिव इन नेचर. पैंटोप्राजोल, राबिप्राजोल, ये टैबलेट्स का चूरा करो और इनको सिर्फ धूप में रख दो 2 घंटे के लिए. धूप में रख दो पैंटोप्राजोल, राबिप्राजोल को, ब्लैक हो जाता है. ब्लैक 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 डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ब्रांड का टैबलेट ले रहे हो. So basically there are some specific reasons always behind making any specific dosage form. अच्छा, when it comes to tablet, उसके लिए specific चीजें बहुत important होती है. टूटना नहीं चाहिए. Every tablet should have equal amount of drug. वो जब भी transport में जा रहा है from one container to another container, it should be able to withstand whatever mechanical pressures it is coming across. Packaging हो, shipping हो. Most important thing, जब भी tablet consume कर रहा हो, whatever amount of drug is being consumed, that amount of drug should get released in the body. ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने टैबलेट खाने के लिए टैबलेट खा तो लिया बट ड्रग मेरे बॉडी में
Why नहीं है? अगर ड्रग मेरे बॉडी में रिलीज ही नहीं होगा, is it going to be helpful in that particular case? If the drug is not dissolved in my body, अगर ड्रग मेरे बॉडी में डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, is there any meaning of taking a tablet like that? क्या वैसा टैबलेट लेके कुछ मतलब है मेरे दोस्त? A big no, right? We need to ensure that whatever drugs we are taking, whatever tablets we are taking, it should release the drug in the body. Clear till here? Any questions, any doubts in your mind? Anything you wish to ask? Yes, no? Can I go to the next part? Can I go to the next part? मेरे को एक बात बताओ. When we talk about all these different factors, when it comes to tablets, capsules, syrups and all, तो ये जितने भी सारे tablets होते हैं, क्या वो सारे के सारे tablets एक ही टाइप के होते हैं? I mean, those tablets don't have any variation between them. ऐसा कुछ होता है कि tablets में variation होता है? जैसे हम लोग ने ओरो डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का बात किया. Have you ever heard about chewable tablets? क्या आपने कभी chewable tablets के बारे में सुना? Chewable tablets के बारे में हम लोग ने कभी सुना है क्या? Chewable tablets are supposed to be chewed. आपको उनको चबाना पड़ता. You're not supposed to swallow them. बहुत बार होता क्या है, डॉक्टर तो सिर्फ ब्रांड लिख के दे देता है. Doctor is not getting into what is supposed to be taken and what is not supposed to be taken, which ideally doctor should get into. Correct? Correct? तो अगर पेशेंट टैबलेट्स ले रहा है and at that particular moment if the patient is not paying, if the doctor is not paying heed onto it, then you need to ensure that बस patient को वही टैबलेट मिल रही है in the is required. If it's a chewable tablet being written as a brand, patient should be said that you are supposed to be chewed. चूएबल टैबलेट के लिए हार्डनेस इंपॉर्टेंट है क्या? 922 में इसके ऊपर इनडायरेक्टली क्वेश्चन था. चूएबल टैबलेट के लिए हार्डनेस इंपॉर्टेंट है क्या? Chewable tablets are something which you are going to chew. आपको वो टैबलेट चबाने हैं. अगर वो टैबलेट आप चबा ही नहीं पाओगे, if the hardness of those tablets are too much and if you are not able to break it, will it be preferable? Will it be preferable to have a tablet with higher hardness and if at all it's a chewable tablet, will you prefer it? जो टैबलेट आप तोड़ नहीं पा रहे हो च्यू करने के टाइम पे, a big no, you won't prefer that. Will always wish to have those chewable tablets which can be easily chewed and it can be broken down into different parts. Am I correct? So hardness when it comes to chewable tablets needs to be maintained into place. Excellent, Tejas. Now I have a question for you. When it comes to different types of tablets, have you ever seen a dosage form which is known as tablets in capsule? अगर देखा है तो लोग ऐसा क्यों बनाते हैं? They make tablets of 2-3 different drugs और फिर वो दोनों टैबलेट बना के लोग उसको कैप्सूल में फिल कर देते हैं. What is the reason and what is the advantage? ऐसा करके क्या मिलता है? आपने टैबलेट बना दी and you fill it those tablets into capsules. Why? How does it help? How does it help? I know we are correlating different chapters again, just the way we did bioavailability, then your kinetics, then your therapeutic window, minimum effective concentration and all. But then what is the reason? Why you make two different tablets and put it, okay, stability, very cool, very good, makes sense. Anything else? Anything else? थोड़े टाइम पहले हम लोग ने बोला था कि अगर ड्रग दोनों एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल होता है तो यू मेक अ बाइलेयर टैबलेट. Many times what happens is in that bilayer tablet also it might happen that drug moves from one layer to another layer. ड्रग एक लेयर से दूसरे लेयर में चले जाता है. तो बहुत सारे लोग एक लेयर को कोट करते हैं फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर चिपकाते हैं. बट मेनी टाइम इवन दिस टेक्नोलॉजी फेल्स. अगेन क्या ये एज अ कोर जब पूरा का पूरा बाइलेयर टैबलेट बन गया है, हैज इट गॉट एनी प्रोटेक्शन ऑन टू इट? हैज इट गॉट एनी प्रोटेक्शन ऑन टू इट? एक्सीलेंट माधव. हैज इट गॉट एनी प्रोटेक्शन ऑन टू इट? नो. बट जब मैं वो सेम टैबलेट्स दो सेपरेट टैबलेट्स बना के जब मैं वो दोनों सेपरेट टैबलेट्स को कैप्सूल के अंदर फिल करता हूँ, कैन आई से इट इज गेटिंग बेटर प्रोटेक्शन? इट इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एसिड. तो एसिड में डिग्रेड नहीं होंगे, इट विल स्टे इन द बॉडी, रीच द राइट प्लेस एंड देन रिलीज द ड्रग. तो यस, देयर इज सच डोजेज फॉर्म एज वेल व्हिच इज नोन एज टैबलेट इन कैप्सूल. क्लियर टिल यू? Clear till you? Just for information, do you wish to go through how we take up on different subjects at Pharma Life? Do you wish me to take you through how we take up different subjects at Pharma Life? Just for your reference.
Yes, we do correlate subjects whenever it comes to anatomy, pathology, pathophysiology. आपने एपीपी में अस्थमा का डिजीज पढ़ा था इन सेमेस्टर 1 और 2 और 3. वो सेम अस्थमा का आपने ट्रीटमेंट पढ़ा था फार्माकोलॉजी में इन सेमेस्टर 3, 4 और 5. एंड वो सेम अस्थमा का मेडिसिनल केमिस्ट्री आप पढ़ोगे 5, 6 या 7 के सेमिनर. That's not how we usually go about when we teach at Pharma Elite. When we teach at Pharma Elite, we start as a topic asthma altogether. अपने लिए अस्थमा एज अ टॉपिक ऑल टुगेदर अपने को करना है एंड नॉट इंडिविजुअल एरियाज सो दैट यू अगेन डोंट हैव टू गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स. Again, just for information, our entire teaching faculty team is from NIPER, ICT majorly. Only few from other colleges which are well reputed like IIT, BHU, Manipal. Then you have from LMCP, which is again another reputed college. So most of us are either NIPER alumnus or ICT alumnus, entire team, including me. Our best rank, as I said you, NIPER 2020 was All India rank 01. NIPER 2021 was All India rank 12. NIPER 22 is awaited. GPAT 2020 was AIR 08. Going further, we started back in 2018, so 2020 was our first batch due in 22 के GPAT का best rank was 35, 22, GPAT 22 I'm talking the recent year. Again, when it comes to predictions, as I said, NIPER 160 questions out of 200 were damn up to what we had discussed it. And briefly and roughly to take you through different subjects, how we teach about, I've stopped screen sharing for a minute. Don't worry, you will be able to see across another screen within next second. I just briefly would like to take you through how we teach different subjects at Pharma Elite, how we keep it interactive and at the same time a fun go when every subject comes in place. First and foremost, when you're preparing for GPAT, don't stick to one book. एक बुक से आप ऑल इंडिया रैंक 01 नहीं ला पाओगे. अगर आप सीनियर्स के नोट्स रेफर कर रहे हो, दूसरे फैकल्टीज के नोट्स रेफर कर रहे हो, instead of reference books, then it's a problem. Reference books is supposed to be referred, but not for every subject, but for important subjects surely. जैसे pharmacology हो गया. If you are not referring to KD Tripathi and referring to any other book for pharmacology, you are creating a problem. अगर आपने फिजिकल फार्मेसी के लिए मार्टिन पढ़ा नहीं था और आपने सीनियर्स के नोट्स या पीपीटी पढ़े थे तो वापस प्रॉब्लम है क्योंकि जीपैट 2020 में मार्टिन में से न्यूमेरिकल एज इट इज आया था एज इट इज सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन सेम नंबर्स सो हैविंग द राइट रेफरेंस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करना है इफ यू आर टारगेटिंग ऑल इंडिया रैंक 01 125 क्वेश्चन होते हैं जीपैट में माय एडवाइस विल बी मिनिमम 110 मैक्सिमम 125 provided you are confident. Most of the time, a question revolves around your mind that बॉस एक साथ कितनी चीजें पढ़ूं, सेमेस्टर अलग है, जीपैट अलग है, कितने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करूं, डेली कितने घंटे पढ़ूं. अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स आर डिफरेंट पैरामीटर. सेमेस्टर और जीपैट का प्रिपरेशन आप पैरेलली कर सकते हो. देयर इज अ स्मार्ट वे टू डू इट. सो एज वी गो फर्दर आई विल टेक यू थ्रू दैट एज वेल. How many question papers to be practiced? Pharma Elite's test series portal I can show you now as well. If you can just wait back for a few minutes, मैं आपको डिटेल में चलो अभी बता ही देता हूँ. टैब ओपन ही है एंड इवन यू आर देयर. लेट्स शेयर स्टॉप स्क्रीन share screen entire screen. All right, here we go. This is Pharma Elite's test series portal. कितने question papers are you can look at it now itself. The number of question papers are 194. Every subject, every question paper is already there uploaded on the platform. Abhi, that's not possible. You can still reach out to team. They'll let you know the possible things and feel free to call them up. So कोई भी चैप्टर बोलो उसका पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है. यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी टू फिनिश अ टॉपिक देन यू विल गो एंड अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर. आपका पढ़ के हो गया, आप डायरेक्ट पोर्टल पे जाओ, आप डायरेक्टली पेपर सॉल्व कर सकते हो. आपको मेरे लिए पेपर अपलोड करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. The best part of it all together is आप जो भी questions solve कर रहे हो, you can check in every question what amount of time you have spent. Many time it happens that आपके attempted सारे question right जाते हैं, no doubt, but did you solve it in limited amount of time? क्योंकि जीपैट में 125 क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 घंटे, बट नाइपर में आपके पास 200 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 ही घंटे रहने वाले. अगेन यू कैनॉट स्विच टैब व्हेन इट कम्स टू आवर क्वेश्चन पेपर. यू विल गेट डिटेल्ड रिपोर्ट कि भाई मैंने कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम डाला है, मैंने 3 सेकंड डाले. सो मेनी टाइम्स योर क्वेश्चन माइट गो राइट और रॉन्ग, बट हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड अक्रॉस दैट क्वेश्चन दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर ओपन करके छोड़ दिया था इसके लिए वहां पे टाइमिंग वैसा दिखा रहा है. मेरा रैंक क्या था, टोटल कितने लोगों ने पेपर लिखा है, सोल्यूशन क्या है,
सेम टैब्स जस्ट लाइक योर जीपैट नाइपर एग्जाम पोर्टल. इनफैक्ट ये साल तो उसका कलर भी सेम था. यू कैन चेक टॉपर ने कितना टाइम लिया, उसने क्वेश्चन कितने टाइम में सॉल्व किए, आपने कितने टाइम में किए, सबके स्कोर्स कितने हैं. यू कैन कंपेयर इट विथ एनीवन यू वांट. फर्स्ट रैंक के साथ कंपेयर करना है तो फर्स्ट के साथ करो. फर्स्ट फरहाद था, सेकंड कौन था, आशीष था, आशीष के कितने थे, थर्ड माही था. सो यू कैन कंपेयर बॉस हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गोइंग राइट और रॉन्ग. That's how you can dictate how you are changing over, how you are preparing for the entrance. And as I said, chapter पढ़ के हो गया, go to the portal and solve it. Don't wait. Again, अगर आप 3 बार उसमें पोर्टल में कुछ भी चेंज कर दो तो आप वापस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, एग्जाम ऑटो सबमिट हो जाता है. फॉर और इन्फॉर्मेशन, आज टच नहीं किया. द हाईएस्ट स्कोर आउट ऑफ 5 होता है, दैट हैज बीन 361. आज ये साल मुझे लग रहा था कि कोई 400 टच करेगा, वो भी नहीं हुआ. बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अगर हम सोच रहे कि हम लोग 500 में से 500. एक टाइम था जब 2011 तक सचिन के सिवाय किसी ने 200 रन नहीं मारे थे. सचिन did it in 2011 once. Sehwag followed it up immediately with a score of 219. एंड ये साथ भी तो क्या ही बात करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार. एक बार रिकॉर्ड टूट जाता है ना, एक बार आप में से कोई 400 टच कर देगा ना, then that 400 will become a habit. It will keep happening again and again. So if you are planning for a specific year of GPAT, targeting all India rank 01, have some specific thing in mind. Identify which are your strong and weak areas. अगर आपका फार्माकोलॉजी वीक है, then you need to study it to a good extent, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं. अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो आपको पढ़ना पड़ेगा. बट अगर आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वीक है और अगर आप उस पर ज्यादा टाइम डाल रहे हो तो नहीं चाहिए. फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले. You have to be smart enough to pick up what is happening. अभी तक कट ऑफ्स कम रहे थे. यहाँ पे कितना 21 मार्क बढ़ा, 2019 4 मार्क बढ़ा, यहाँ पे 12 मार्क बढ़ा, यहाँ पे 23 मार्क बढ़ा, यहाँ पे 14 मार्क बढ़े. 22 was expected to be 200 but this went to 147. कट ऑफ कम हो गया तो तुम्हारे लिए तो बल्ले बल्ले. और अपना टारगेट तो ऑल इंडिया रैंक 01 का स्कोर नहीं है. अपना टारगेट अपना स्कोर है 400 मार्क्स. So if I want to score 400 out of 500, I just need 100 questions correct. मुझे 100 करेक्ट क्वेश्चंस चाहिए. अब मुझे वो यहीं डिसाइड करने पड़ेंगे, रिस्क यहीं पे सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. एक मार्क से जीपैट टाइपर में 15-20 रैंक का फर्क पड़ता है. यस, एक मार्क से 15-20 रैंक का फर्क पड़ता है. वो कैसे पड़ता है एंड ऑल दैट आई विल सून लेट यू नो. डोंट वरी, बट यस दैट डिफरेंस अक्रॉस कम्स अप इन. So how to avoid that difference, how to be smart enough, we'll talk about that as well. I just want you to observe one thing. यहाँ पे 13 मार्क का डिफरेंस है. ये दोनों के बीच में 13 मार्क के डिफरेंस में 172 रैंक्स का डिफरेंस है. आई होप यू ऑब्जर्व एवरी सिंगल मार्क काउंट्स. एक मार्क से बहुत बड़ा गैप पड़ सकता है. जीपैट के बाद नाइपर है, अलग अलग एंट्रेंस के अलग रिक्वायरमेंट्स है. जीपैट हैज 125 क्वेश्चंस इन फॉर योर 3 आवर्स. बट व्हेन यू टॉक अबाउट नाइपर, नाइपर 200 क्वेश्चंस एंड ओनली 2 आवर्स. यस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है. बेसिक और एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेगा, इंटेलिजेंस क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे. डोंट वरी, वी ट्रेन यू फॉर ऑल ऑफ देम. Manipal again 200 questions in 2 hours. ICT MTech has got nothing to do with engineering. It's altogether a different thing. If you want to see the detailed part of this video, पूरा का पूरा वीडियो भी पोर्टल पे अवेलेबल है. मैं आपको वो वीडियो भी बताऊंगा. बट अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ. जैसे ऑल ओवर इंडिया 7 नाइपर है. इन ऑर्डर टू एंटर इनटू नाइपर यू आर सपोज टू बी जीपैट क्वालिफाइड. नाइपर की आपकी 2 साल की फीस अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 lakhs. If you happen to qualify GPAT, अगर आप GPAT qualify करते हो, you get a stipend of 12,400 rupees per month. Yes, अगर आप GPAT qualify करते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पर मंथ 12,400 रुपए देगा पर मंथ. मतलब आपका 2 साल का स्टाइपेंड हो गया 2,88,000 रुपीज. यस माय फ्रेंड. और आपकी फीस उससे भी कम है. इट मींस दैट यू कैन मैनेज योर ओन फीस. लेट्स टॉक अबाउट पैकेज. नाइपर मोहाली से जो हाईएस्ट पैकेज गया है दैट इज 28 lakhs. हाँ, मास्टर्स के बाद 2 लोगों को. सर आई कैनॉट बी दैट टू फ्रॉम आउट ऑफ 215 पीपल. ठीक है, अगर आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि आप वो 2 नहीं हो सकते, ठीक है. देन देयर वर अनदर 2 पीपल हु आर एट 20 lakhs. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वो 2 भी नहीं हो सकता हूँ, ठीक है. But approximately 50 people out of those 215, which means 25% minimum, are going in the package of 8 to 13.5 lakhs per annum. Yes, starting package 8 से 13.5 लाख. What more you want? इससे ज्यादा क्या पैकेज चाहिए? 8 से 13.5 लाख तक का पैकेज स्टार्टिंग पैकेज है आफ्टर पेइंग अ फीस ऑफ 2 to 2.5 lakhs only. That's with Naipur Mohali. Hyderabad major range is 8 to 13.5 only, followed by Ahmedabad which goes highest to 7.5 as of last year. बाकी के 9 developing है, will take time to reach to the same packages.
But what I want you to observe was something around this. You observe GPAT में कितने क्वेश्चन थे? 125 क्वेश्चन, करेक्ट? 125 क्वेश्चन के लिए अपने को प्रिपेयर करना था. If you observe the year 2019, 20 plus 8, 28 questions from chemistry, pharmaceutical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Talk about different types of chemistry. Questions वहीं से थे. And 35 questions from pharmacology and APT. 28 plus 35 comes to a total of 63 questions. 63 questions out of 125 questions, which basically means 50% of my GPAT paper is only and only from these two subjects. And if we hate these subjects, then it's not going to work out, my friend. अपने को ये subjects पे ज़्यादा focus करना पड़ेगा. Am I crystal clear? समझ में आ रहा है? तो जब आप GPAT नाइपर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, दिस शुड बी योर प्रायोरिटी नंबर 1 फॉलोड बाय 2. देन यू कम टू फार्मास्यूटिक्स, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. देन यू कम बैक टू फार्माकोग्नोसी वेयर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर राइजिंग. Go back to physical pharmacy, biochemistry, go back to BPPK, followed by palm analysis and biotech. So having that subject preference is very important. If you are working first on the clinical pharmacy, जहाँ से कुछ भी नहीं आता, या आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो जहाँ से सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आते हैं, then you are digging a hole for yourself. Direction is we have analysis for NIPER paper. वैसे ही 160 questions predict होते हैं. It's not always on, it's not on the basis of blind game. It was all out of observation that we got 160 questions predicted out of 200. हमेशा questions solve करने के अलग-अलग तरीके होते हैं. One way is that आपको पता है यही आंसर है and you take it. Marking the correct answers when you are sure. Second thing is that other part of it is second part of it is that other than that when you talk about elimination method, I don't know कि answer A है कि B है कि C है कि D है, but I'm sure that answer is neither C nor D. So answer somewhere lies between A or B only. तो अगर आंसर A और B के बीच में ही है, then I have to just think about that. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, calculate the child dose for remdesivir. Calculate the child dose for remdesivir. अब देखना ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे लोग सॉल्व कर पाएंगे, but they might just not go for it. Calculate the child dose for remdesivir by Young's formula. एक चीज याद रखना, GPAT, NIPER, ICT, BITS, Manipal, wherever you go tomorrow, you are giving any aptitude test for any of the interview. Remember this always. Calculate the child dose for remdesivir by Young's formula. Given that adult dose is 750 mg. एडल्ट डोज 750 mg है, चाइल्ड डोज कैलकुलेट करना है यंग्स फार्मूला से. अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोगों को यंग्स फार्मूला ही नहीं पता, तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ देते हैं. एक स्मार्ट बंदा होगा जो चारों ऑप्शन देखेगा. एक ऑप्शन था 800, एक ऑप्शन था 850, एक ऑप्शन था 900 एंड लास्ट ऑप्शन वाज 325 mg. आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप यंग्स फार्मूला गूगल कर रहे हो, यंग्स फार्मूला में एज भी लगता है. मैंने क्वेश्चन में आपको एज नहीं दिया. तो मेरे कहने का मतलब कुछ इस प्रकार है कि ये क्वेश्चन लॉजिकल वे से सॉल्व हो सकता है. एंड दैट लॉजिकल वे इज योर चाइल्ड डोज इज ऑलवेज लेस देन एडल्ट डोज. बच्चे का जो डोज होता है, बच्चा जो अमाउंट ऑफ ड्रग लेता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन एडल्ट डोज. दिस वी हैव स्टडीड राइट इन द बेस. Am I correct? Public, Madhav, Mittal, Heath, Abhay, Vaishali, we all have heard about it. Am I correct? Tejas, Khushi. So basically कहने का मतलब ये है, ये 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन एडल्ट डोज से कम वाला है, एडल्ट डोज कितना था 750 mg. एडल्ट डोज से कम वाला ऑप्शन कौन सा है? 750 से छोटा वाला ऑप्शन 325. दैट्स द आंसर. पिक अप GPAT 2017 क्वेश्चन पेपर, यू विल गेट दिस क्वेश्चन. रेमडेसिविर नहीं था, दूसरा ड्रग था. कहने का मतलब ये है कि बॉस देयर इज अ स्मार्टर वे टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन अप्रोच करना, क्वेश्चन को रीड करके, क्वेश्चन को सोच के क्वेश्चन पे अप्लाई करना is something which is totally a different game altogether. And you have to be smart in that particular regards, that you observe how those questions have been framed up, how those questions are turning up into your paper. Going further, the next part of it, ये अपना exam का test portal, flagging, mark for review, same as GPAT. As I told you, you can observe what amount of time you are spending on any question. Although I am going right, but मेरे पास sniper में हर question के लिए उतना time रहेगा क्या? That's a different game. You can compare your report as I showed you. Paper solving strategy. Understand, paper solve करने का एक अलग ही तरीका होता है. 125 questions जो है, you can solve it in 3 hours and 3 rounds. पहले तो एक वो 35 क्वेश्चंस पकड़ लो जिसके बारे में मैंने कुछ भी सुना नहीं, मुझे कुछ पता नहीं. वो 35 क्वेश्चंस को टच मत करो. डोंट टच इट इनिशियली. अगर ये 35 क्वेश्चंस चले गए तो बाकी के 90 क्वेश्चंस बचे.
इन 90 क्वेश्चंस वैसे है जिसके बारे में मैंने सुना। लेट्स से ये 90 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस ऐसे थे out of which I am sure that whatever I am marking is correct. Round 1 में से वही 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो about which you are 1000% sure that what you are marking is correct. Round 2 you should take risk on all chances of you being right or wrong is equal 50-50 chance. मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग ये रिस्क नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, उसे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो उनको आते हैं। तुमको ये नहीं करना है, यू आर सपोज्ड टू टेक दैट रिस्क। लेट्स सी ये 40 क्वेश्चंस में से मेरे 10 क्वेश्चन राइट गए एंड मेरे 30 क्वेश्चन रॉन्ग गए। आई होप यू ऑल आर अवेयर जीपैट में नेगेटिव मार्किंग है। If you attempt the question and if that question goes correct, you get 4 marks. If you don't attempt the question, you lose only 4 marks. But if you attempt the question and if that marked answer goes wrong, you lose 4 plus 1 5 marks. Negative marking 5 marks जाता है। नेगेटिव मार्किंग एडिशनल तो 1 ही एक्स्ट्रा का है। तो आपका 30 क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है तो 30 into -1 you are losing -30 marks. But when you took that risk and when that 10 questions went correct, 10 into 4 is plus 40. प्लस 40 माइनस 30 मेक्स अ नेट स्कोर ऑफ प्लस 10 मार्क्स। 1 मार्क से 15-20 रैंक का फर्क पड़ता है। 10 मार्क से से आप स्टार्टिंग में से कितने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे फुल लेंथ टेस्ट पेपर में, but gradually there will be a day when you will attempt 110 questions out of which 100 will go correct. 100 correct would mean 100 into 4, a score of 400. 10 wrong would mean 10 into -1 minus 10. 400 minus 10 will be a score of 390. 390 as a score will be for the first time in the history a rank of all India rank 0-1. So let's see what comes up. अभी तक तो हुआ नहीं है, but शायद तुम ये कर सकते हो. Stop doubting yourself. Stop thinking what happened in the past in GPAT or sorry what happened in the past in NEET and all those semesters. Semesters का pointer यहाँ पे matter नहीं करता है. Anything and everything is possible. It's all about perception. If you believe you can do it, trust me, you will be able to do it. You will be writing the history first time. That will be first All India Rank 01 from your college for your college. अपने को जीपैट में फार्माकोलॉजी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन सा ड्रग कहाँ पे कौन से रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, क्या थेरेपेटिक एक्टिविटी आई, वो सारी चीजें अपने को जीपैट में नहीं चाहिए। जीपैट इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू टू राइट अ शॉर्ट नोट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने को नहीं चाहिए केटायन एनायन कार्बन एनोन, रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या था, रिएजेंट क्या था। फार्माकोग्नोसी का अपने को मेथड ऑफ कल्टीवेशन कोई नहीं बोलने वाला है लिखने के लिए जीपैट में। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला हाउ यू प्रिपेयर फॉर जीपैट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। So if you are targeting something huge in the upcoming years, then we are waiting for you. Together, let's make it happen. And trust me, it is possible, provided you believe in yourself. Just wait a minute. I'll just take you briefly through all the different subjects how we teach about. Just a minute. Meanwhile, just to understand and just to get an idea, what is your targeted score? आप GPAT में कितना score target कर रहे हो? What do you think after listening at this particular webinar, getting an idea about कौन से questions कहाँ से आते हैं, कितने questions आते हैं, आपको क्या लग रहा है आप कितने questions solve कर पाओगे? How much will you be able to score across? Do you doubt yourself that boss अपना score is going to be limited? Do you think that a number which is around 300 as a score is too big for you, और आपको लगता है कि नहीं भाई 300 तो easily आ सकता है? What do you think? Is 300 too tough for you or is 300 too easy for you? कुछ तो लगता रहेगा। आपने सब्जेक्ट्स देखे, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पता है आपकी वीक है या स्ट्रॉन्ग है, सो यू आर अकॉर्डिंगली सपोज टू वर्क आउट ऑन टू दैट पर्टिकुलर केस दैट अगर मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है देन आई एम सपोज टू फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, एंड अगर मेरा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है देन आई एम सपोज टू प्रोसीड ऑन दोज ग्राउंड्स on those numbers in a smarter way to make it happen. What I'm trying to address across, okay, 60 questions, excellent teachers, target all India rank 01 only. अपने टारगेट को कभी भी कोई कंपैरिजन में मत रहने दो कि पास में इतना ही स्कोर आया था, इतना ही रैंक आया था। अपने टारगेट को अपने लिए रखो। अपने को 500 ऑन 500 टारगेट करना है। एक बार 500 ऑन 500 आ गया तो और कोई जीपैट ऑल इंडिया रैंक 01 हो या ना हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। कम ऑन, ये आर बी कॉन्फिडेंट इनफ माधव, आ सकता है तेजस। So just to take you briefly through how we take up different subjects at Pharma Life, we basically take up different subjects in different ways altogether. APP के concise tables है as a part of our soft copy notes, सिर्फ वही पढ़ना है। For your information, Pharma Light app is already on the Play Store. You can go and download Pharma Light app on the Play Store to get free recordings, free test papers, free study materials. Other than that, we always have flowchart patterns to teach.
एवरीथिंग इज इन सिंक। यहाँ पे इसका एनाटॉमी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी है कि अस्थमा कैसे हुआ। मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि तुझे ऑलरेडी पता है अस्थमा कैसे हुआ, और यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट है, दैट ट्रीटमेंट कैसे अक्कर होगा। आईयूपीएसी कंपैरेटिव वे में होता है। अगर आप ये सारे क्विनोलोन्स का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो, ये सारे क्विनोलोन्स में ये रिंग कॉमन है। ये सारे क्विनोलोन्स के थर्ड पोजीशन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबके फोर्थ पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल ग्रुप जिसको ऑक्सो ग्रुप बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉमन। देख लो एवरीथिंग, सबके पास यहाँ पे फ्लोरो है, सबके पास यहाँ पे पिपराजिन रिंग है। बट व्हेन यू आर डूइंग आईयूपीएसी आपको कंपैरेटिव ग्राउंड्स पे ही करना होगा। नॉरफ्लॉक्सासिन इज द ओनली क्विनोलोन जिसके फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखा है। Ciprofloxacin is the only fluoroquinolone जिसके फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपेन रिंग है। Datifloxacin is the only fluoroquinolone जिसके 8th पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 8 मिथॉक्सी। Sparfloxacin is the only fluoroquinolone जिसके 5th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। That's the reason you have 5 अमाइनो in place। सर ये तो डिफरेंट चीजें होगी, बाकी की चीजें जो सेम है, जैसे 4 ऑक्सो, ऑक्सो मींस कार्बोनिल, क्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्विनोलिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, वो उसके आईयूपीएसी में कॉमन रहेगा। पिपराजिन रिंग वो उसके आईयूपीएसी में कॉमन। राइट फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टू स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सब लोग एसएआर में थियरी भर भर के पढ़ते, क्या कोई जीपैट में आपको बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसएआर ऑफ क्लोराम्फेनिकोल? नो, दे स्ट्रेट अवे हैव क्वेश्चंस। अगर मैंने नाइट्रो को अमाइनो से रिप्लेस किया तो क्या होएगा? तो आपको एक्चुअली पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग ने फार्म केम को ऐसे एसएआर के फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू बेसिकली ओवर हियर इज, आपको सिर्फ वो पॉइंट्स याद रखने हैं जो बेनिफिशियल हो, उसको छोड़ के जो भी चेंजेस हो रहे हैं विच आर नॉट एडवांटेजेस वो सब भूल जाओ। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एसआर में 6 पॉइंट्स है, बट मैं सिर्फ यही पॉइंट याद रखने वाला हूँ कि अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ, देन आई गेट एक्टिव कंपाउंड्स, बस दैट्स इट। बाकी अगर मैं इधर क्लोराम्फेनिकोल के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूँ या OH या साइनाइड से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो एक्टिविटी लूज हो रही है। अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को मेटा या ऑर्थो पे पुश कर रहा हूँ तो भी एक्टिविटी लूज हो रही है। तो बाकी के सारे पॉइंट उसके लॉस ऑफ एक्टिविटी की है, तो मैं क्यों पढूं? व्हाई डू आई बाय हार्ट? हैव अ स्मार्ट वे टू स्टडी, दैट्स द बेसिक स्मार्ट थिंग व्हिच वी ऑल आर सपोज्ड टू डू। डाउन की वर्क करोगे जैसे थियरी के लिए पढ़ रहे हो, वैसे एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ा जाता है। There is a different way altogether. For those who missed to register on the registration form, I have shared it in the chat box again. In order to attend further demo lectures, feel free to fill up this form. Those who will fill this form will be getting further lectures, link for the further demo lectures. Coming back to what we were discussing, SAR तो easy हो गया। सिंथेसिस में भी कोई आपको पूरा जीपैट में सिंथेसिस लिखने नहीं बोलने वाला है, वो आपको सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल पूछता है। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ डैप्सोन, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर ड्रग्स, और ये सर डैप्सोन का आईयूपीएसी भी आया था। डैप्सोन बहुत इजी है, आपको अगर फाइनल ड्रग का स्ट्रक्चर पता होता है ना, जैसे डैप्सोन में D stands for डाई, A stands for amino, ये साल नाइपर में आईयूपीएसी आया था। D for डाई, A for amino, P for phenyl, SONE, SONE stands for sulfone, डाइअमाइनो, डाइफिनाइल सल्फोन। अब एक बार डैप्सोन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई डैप्सोन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है। ऑब्जर्व, डैप्सोन में क्या डाइअमाइनो है? हाँ, 2 अमाइनो है। क्या 2 फिनाइल है? डाइअमाइनो डाइफिनाइल है, दोनों फिनाइल। क्या इनमें सल्फोन है? यस, इट्स देयर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस। हैव अ स्मार्ट वे इन प्लेस टू स्टडी द थिंग्स। जैसे ही सिंथेसिस, वैसे प्रोडक्ट का भी एक सेपरेट लिस्ट है। हैव अ डिफरेंट पाथ ऑल टुगेदर कि आपके कौन से वीक एरियाज है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है। हेट्रोसाइकल्स, इतने सारे ड्रग स्ट्रक्चर्स है पूरे फार्माकोलॉजी में, कैसे आप पूरे के पूरे सारे ड्रग्स बाहर करने वाले हो? नो, राइट? सो द स्मार्ट वे टू डू इट इज यू शुड नो कौन सा ड्रग में कौन सा रिंग है। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है, फ्यूरान रिंग कंटेनिंग एंटी अल्सर ड्रग, द आंसर इज ranitidine. इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग एंटी अल्सर ड्रग, द आंसर इज सिमेटिडिन। ये पूरी की पूरी चीजें पूरे सिलेबस की फार्माइलाइट में ऑलरेडी करके रखी है। नाइपर 2021 में 7 questions were only on the heterocyclic rings. So if you know how to study, things are very easy. You should know what is the end. Once you know that, it's always easy. Organic chemistry में similar reactions should be taken together. Walsh-Fishner reduction की जैसे Clemmensen reduction काम करता है। अपने को mechanism नहीं चाहिए। दोनों चीजें इतना टफ जाता है, कलर डायग्राम्स रखो, it will make it more easy. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अल्कोलॉइड, इंडोल रिंग कंटेनिंग अल्कोलॉइड। पढ़ने के टाइम पे ही वैसे पढ़ो जैसे क्वेश्चन आता है। इतना बड़ा कोग्नोसी है, सब कैसे पढ़ते बैठेंगे? द टेबल व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू, इफ यू रीड एंटायर कोग्नोसी इन दिस सेम फॉर्मेट, पूरा का पूरा टेबल, तो इसके सिवाय तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर आपको
थियरी में सिर्फ अलग से मेथड ऑफ कल्टीवेशन पढ़ना, इसमें से भी क्वेश्चन हमेशा ये 1 2 3 माइक्रोस्कोपी यूजेस और केमिकल टेस्ट इसी में घूमते हैं. So once you know how to study it, trust me, GPAT Sniper is a cakewalk. Till the time you don't know how to study, आप randomly कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, आपको GPAT Sniper हमेशा ही tough लगेगा in that particular case. So have a smart way. That's the most important thing when it comes to GPAT Sniper. Aki, I have already explained you. Just believe in yourself and trust me, you will be writing history soon. Stop doubting yourself. Stop doubting your potential. In case if you have any doubts, any questions, feel free to reach out to the team of Pharmylite. Download Pharmylite app from the Play Store. You can also visit us onto our website, which is pharmylite17.com. अगर आपको past previous year के rankers देखने हैं और if you want to check their performance, everything is right on the website. Most important, मैंने अभी जो सेशन इतना थोड़ा फास्ट लिया, I mean, the orientation session, strategy for GPAT, Sniper and all. If you wish to go through that entire session, you can find that entire detailed session on YouTube. I'll take you briefly through that as well. आपको यूट्यूब पे वो पूरा का पूरा सेशन, कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना है, कितने कौन सी चीज पे फोकस करना है, एवरीथिंग इज राइट देयर ऑन यूट्यूब. यू विल get the detailed information. This is Pharmylite's website, pharmylite17.com. You can find our Sniper rankers, you can find our GPAT rankers, Sniper 2021, GPAT, what are the different certificate courses we are doing. So we are always industrial. It's not only theoretical purpose, but it's industrial in parallelly as well. So yes, this is just the start, and there is a long way to go. In order to get in detail about anything, or if you want to contact us, just click on contact or feel free to WhatsApp us. WhatsApp पे click करोगे तो आपको direct करेगा on a different page. आप मोबाइल से directly WhatsApp पे interact भी कर सकते हो टीम के साथ. Anything and everything which you want is already available. आप सिर्फ go to chat में I'm interested लिख दो तो अपने आप चले जाएगा text. You don't have to do anything. So have the smart thing in place, prepare in a smart manner so that things end up the way we want it to end up. Dharmesh Mehta, just आप YouTube पे जाओ, strategy for GPAT type करो, धर्मेश मेहता type करके, you will get a detailed video of tips and tricks. सेम चीज ही है, बट एकदम आराम से every point being explained in detail. To get more description about it, you can subscribe to our YouTube channel. Again, our YouTube channel has a lot of content for you which will make you ready in a smarter way. Most important thing is believe in yourself, trust yourself, and be 1000% sure of what you are doing. Once you start believing that you can do it, trust me, you will be able to do it. The new batch has just started. If you are willing to join in Farm Line, feel free to reach out onto this particular number. There are group discounts available. So if you are coming in a group of 5, 7, 11, you will be eligible to get the further discounts as well. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ. जो पहले नहीं हुआ वो आगे नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है. नीट छूट गया, महाराष्ट्र सीईटी छूट गया, बट अभी भी बहुत कुछ बाकी है, प्रोवाइडेड वी डिसाइड टू मेक इट हैपन. All the best to all of you. I hope last 1.5 hours was totally worth your time. You all enjoyed it and could get the best out of it. In case if you have any more queries, any questions, please feel free to post it in the chat box. Over to you all. Thank you so much for your time. Thanks for being there. Any questions, Heath, Tejas, Madhav, Mittal, Vaishali? Anything you wish to ask? Gaurav, the lecture for the new batch has just commenced today evening, so you can join in that same batch as well. Anything else from anyone? Mittal, Tejas, Abhay, Kanaya, nothing? Alright, no worries then. All the best. Stay safe. Take care. Start with your Google. Once again, those who are yet to fill the registration form, I've pinned it in the chat box. In order to get the link of the further lectures, please fill the form. Thank you so much. Madhav, in case you need only study material, you can still reach out to the team. They'll help you out with the process. Don't buy anything from app directly. That will ask you for a different cost altogether. You can instead go to the
contact number, call them up. They would help you out with a better pricing. Thank you so much.